Good morning, all of you. Myself, Nishchal Joshi. I am your physical education teacher. I welcome you all on the behalf of my whole physical education department on this new academic session. Students, hope you all are fit and fine. Be at home and be safe. And do your workout regularly. Because if you will do your workout regularly, it will enhance your memory power. As you all know that this subject is health and physical education, and it tells you about how to improve your health, what type of activities you have to do, and about physical education. As you all know that our central government is also launching many more programs on physical education, that is to remain fit. You know, when our students, our youth is fit, then our country will remain fit and achieve a lot more success. Many more programs are launched by our Prime Minister Narendra Modi, like Khelo India program and many more, to check whether the students are doing physical activities during this era where there is a lot of load, stress on the students due to studies. Okay, now we will move to our next slide. That is, what is physical education? Look, actually students, the concept of physical education is not new. The roots are very old, since ancient Sparta, Greece, Athens, India. Anciently also, when child used to go for education on gurukuls, they used to learn Shastra Vidya, physical workout along with bookish Vidya. आप सभी ने देखा होगा, और आजकल तो हमारे बहुत सारे पुराने प्रचलित सीरियल्स भी रामायण महाभारत दोबारा शुरू हो गए हैं, तो आप लोग उसमें देख रहे होंगे कि जो राजा के भी बच्चे होते थे उनको गुरुओं के पास जंगल में भेजा जाता था ताकि वो प्रॉपर वर्कआउट सीख सकें, रहना सीख सकें, मतलब अब कुल मिलाकर अपनी लग्जरियस लाइफ से बाहर निकल के जिए। सिर्फ किताबी ज्ञान अगर उन्हें हासिल करना होता तो वो गुरु को अपने दरबार में, अपने महल में भी बुला सकते थे, बट बच्चे वहां जाते थे, उनके राजकुमार, वहां पर वो क्या सिर्फ बुकिश नॉलेज सीखते थे, सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करते थे? जी नहीं। उसके साथ साथ उन्हें शस्त्र विद्या, फिजिकल वर्कआउट, खाना बनाना, पानी भर के लाना, ये सब चीजें भी सीखनी पड़ती थी जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, education which is necessary for the wholesome development of an individual is known as physical education. Wholesome development means the development of your whole body. It includes mental development, physical development, intellectual development, neuromuscular coordinations development, and many more developments which are beneficial for each and every one from beginning till end. Now it comes the aims and objectives of physical education. As I have told you earlier also what the physical education is. So the aim is very clear, that is wholesome development of an individual. बच्चे का पूर्ण विकास कैसे हो, and this aim can be achieved step by step. और जो वो स्टेप होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. Let's move to the next slide. Objectives of physical education. First objective is physical development. It is the prime objective of physical education. It leads to the development of our organs, systems such as respiratory system, circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system. And in this, physical education also tells you that whatever workout you do, आप जिस भी प्रकार का वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इट्स इम्पैक्ट ऑन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी पे, ये उसके बारे में भी हमें जानकारी देता है. सेकंड कम्स अवर मेंटल डेवलपमेंट.
मेंटली डेवलप होना, जब तक आप मेंटली डेवलप नहीं होंगे तब तक आप किसी भी काम को पूर्ण रूप से सही नहीं कर पाएंगे. पर्पज बिहाइंड दिस ऑब्जेक्टिव इज मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. The various physical activities of physical education programs need alertness of mind. Alertness of mind in the sense, कैच आ रहा है, आपको अलर्ट रहना है कि आपकी बॉडी पोजीशन क्या होनी चाहिए, आपके हाथ कहाँ पर होने चाहिए, आपको अपने को भी बचाना है, सेव करना है. तो हाउ मच अलर्ट यू आर. डीप कंसंट्रेशन, यू हैव टू कंसंट्रेट while playing any game, while doing studies. Concentration is must required. And calculated movements, how much movement you have to do. It is truly said that physical activities sharpens mind, which is essential to perform physical activities. Let's move to the next slide. Social development. This objective is related to social traits. As you all know that man is a social animal, so he has to live in the society, and how he is going to live and maintain the relationship with their neighbors. The objective is related to social traits, it is very clear, which are essential for better adjustment in life. Physical education develops such qualities, that is leadership quality, how to become a good leader. This you can only learn by physical education. Cooperation, how to cooperate with your family members, you have to cooperate with your society, you have to cooperate with your team members. Fair play, when you are playing any game in the ground or in life, you have to play it fairly. Sportsmanship, the most important thing is sportsmanship. One, he is a player or not a player, a person should have a sportsmanship quality. Tolerance, how much he can tolerate, and many more. Next we come in emotional development. Every individual have various type of emotions. As you all know that we are having many emotions like pleasure, hope, jealousy, hate, fear, distress, anger, etc. So in physical education there are various programs which helps in developing these emotions and also teaches us to have proper control over them. Beta, it is truly said that अगर किसी बच्चे में, if any student is having a lot of anger, stress, तो पहले से ही ये कहा जाता है कि उसे ग्राउंड में खेलने के लिए छोड़ दिया जाए. अगर हम उसे ग्राउंड में छोड़ेंगे तो अपना सारा स्ट्रेस और जो एंगर है वो ग्राउंड में खेल के निकाल सकेगा और उसी के बाद अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हेल्थ डेवलपमेंट, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ डेवलपमेंट. आजकल जो ये कोरोना वायरस चल रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि हर कोई कह रहा है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करो. तो आई थिंक नो सब्जेक्ट टोल्ड यू अबाउट दिस इम्यूनिटी एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है या आप इसमें पढ़ पाते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करें. It is also an objective of physical education to educate an individual about prevention about diseases, our daily life diseases like hypertension, diabetes या कॉमन डिजीज हो गई हैं. तो इससे आपको कैसे छुटकारा पाना है. रिड्यूस इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल, फर्स्ट एड एंड मैनी मोर. जैसे आप लीजिए फर्स्ट एड. किसी को भी खेल के दौरान या आप नहीं भी खेल रहे हैं, घर में किसी को चोट लग गई, आपको लग गई, तो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले यू शुड नो व्हाट ट्रीटमेंट यू हैव टू टेक. दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. And the last one is neuromuscular coordination. This objective is concerned with strong relationship between nervous and muscular system. The activities in physical education provides ample opportunities for a better NMC. NMC means neuromuscular coordination. Look, what is neuromuscular coordination? The message which your brain receives by your eyes and it gives the message to your muscular system. That is neuromuscular coordination. For example, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास बॉल आई, आपकी आईज ने बॉल देखी और सीधे ब्रेन को रिस्पॉन्ड किया. ब्रेन ने आपकी मसल्स को रिस्पॉन्ड किया कि आप अपने को हाथ से बचाएं या पाँव से बचाएं. दैट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन
and it is a very important part of physical education. Thank you. Hope you enjoyed this session. Stay safe, stay at home. Thank you.